हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करता है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर एग्जांपल्स पढ़े थे। आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, द एक्सरसाइज 3, जो कि डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, उसको सॉल्व करेंगे और वन बाय वन हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रही है, जिसको आप नहीं समझ पाए हैं अपने क्लासरूम में, उसको आप फॉरवर्ड करके आप देख लीजिए। और बाकी कोशिश करिए कि एक्सरसाइज को खुद से पहले ट्राई करें, फिर एक्सरसाइज की सोल्यूशन के ऊपर आप जाइए। ओके, मैं यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को कराऊंगा ताकि वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो किसी भी बच्चे को कहीं पर भी डिफिकल्टी होती है तो वहां पर वो देख सकता है हर एक अपने एग्जाम्पल को। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो वी हैव दिस स्क्रीन। Okay, so the screen is visible now. That is your exercise 3 I have written here. So the first problem is, let us write here first problem. First problem तुम्हारे पास क्या है? First problem है calculate the derivative to the right. It means right hand derivative we are going have to calculate to the right and left at the point x is equals to, at the point here x is equals to 1. So for the function which is defined like this, this is fx is equals to x square minus 1 when x is greater or equal to 1, and this is your 1 minus x when x is less than 1. Okay, so and then you show that this is f dash x does not exist at x is equals to 1। x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज दिखाना है। और उससे पहले आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यू नो दैट since left hand derivative is defined like this, या इसको हम शॉर्ट में एल एच टी भी कह सकते हैं, is defined like this. This is limit h tending to 0 and at the point a point पे अगर हमें डिफाइंड होता है तो ऐसे फॉर्म होता है a, दिस इज a माइनस h माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h, है ना। ये हमारे पास फार्मूला हम अप्लाई करते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, है ना। इस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम ये फार्मूला बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो वी हैव जस्ट राइट इन लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जो पॉइंट है वो x इक्वल्स टू 1 है, तो दिस इज 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। ओके, तो लेट अस सी कि हमारे पास x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना। x बराबर 1 पे अगर फंक्शन की वैल्यू की हम बात करें तो here we can say, here we have here f of 1 is just equal to, because x is greater or equal to 1, उसके लिए फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज योर 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज we will put f1 is equals to 0 in this expression. So this is LHD is just equal to limit h tending to 0, और आपको फंक्शन 1 माइनस h के लिए कौन सा लेना है, when x is less than 1, है ना। तो लेस देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन ये है, दिस इज 1 माइनस x, तो इसकी जहां x है उसकी तरफ रखेंगे 1 माइनस h। तो दिस इज योर 1 माइनस h इन द प्लेस ऑफ x। ओके,
and this is minus of 0 divided by minus of h. So from here you will get this is limit h tending to 0, and this is your 1 minus of 1 minus minus plus h divided by minus of h. If this is cancelled, you will get this is your limit h tending to 0, and this is minus of 1, and that is equal to minus. So the left hand derivative here, LHD of this function is just equal to minus 1. Okay, at x is equal to 1. Okay, अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की. तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, दैट इज योर आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना. इट जस्ट इक्वल टू लिमिट h tending to 0 at the point a, so this is a plus h minus of fa divided by h. Okay, and from here you will have this is your limit limit h tending to 0, here the point is 1, x is equals to 1 is the point, so this is f is 1 plus h minus of f1 divided by h. Okay, so here we will use function this when x is greater equal to 1, this is x square minus 1. So in the place of x you will put 1 plus h ka whole square. Okay, so you will get here this is your limit, this is your limit h tending to 0, this is your 1 plus h ka whole square minus 1, and this is minus of 0 divided by h, because f1 is 0. So this is limit h tending to 0, this is the 1 plus h square and plus of 2h, okay, plus of 2h and minus of 1 divided by h. So we will cancel out it. So from here you will get this is limit h tending to 0, you take h outside, this will be h plus 2 divided by h, this h and h cancel. When apply limit you will get 0 plus 2, it is equals to 2. तो जो राइट हैंड लिमिट है दिस आर एच डी इज जस्ट इक्वल टू 2, बट लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज योर माइनस ऑफ 1. ओके, सो एट द पॉइंट x is equals to 1, x is equals to 1, so this we have calculated the right hand derivative and left hand derivative at the point x equals to 1, but so you, since you can just say the left hand derivative is not equals to right hand derivative, this implies function is not differentiable. Function not differentiable at x is equals to 1, x बराबर 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, so this is about the left hand derivative and right hand derivative we have calculated. Okay, so you can just say simply, अगर आप कहना चाहो तो f dash x does not exist. At x is equals to. Clear? So this is the solution of the first problem, which is they ask about the left hand derivative and right hand derivative. Second problem, question number 2 of the exercise. Your exercise is on the page number 45 of the your book, differential calculus book प्रकाशन के, you know that. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, दैट इज रिकमेंडेड. तो दिस इज so that the function that is your fx is just equal to x minus 1 की power 1 by 2 is not differentiable at x is equals to 1. तो ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, which is not differentiable at x is equals to 1. Okay, so we have to calculate the left hand derivative and right hand derivative, or the value of the function at 1 will be 0, है ना.
तो यहाँ पर हम अगर सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, so first this is f1, you just calculate f1, so this is your g1 minus 1 whole power 2, this is equal to 0. Okay, and next लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो वी नो दैट दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, this is f of at the place of 1, this is 1 minus h minus of f of 1 divided by minus of h. So we'll have this is limit h tending to 0, f1 plus 1 minus h. So in the place of this x, we will put 1 minus h minus 1 की power 1 by 2 and minus of 0 divided by minus of h. So from here you will have this is limit h tending to 0, and this is your minus of h the power 1 by 2 divided by minus of h. So here we get the iota. ठीक है, here we have you can clearly see कि यहाँ पर जो this is a limit h tending to 0 and this is a minus 1 की power half आ गया, and this is a h की power 1 by 2 divided by minus of h. So this is undefined, है ना, because minus 1 is there, and if you अगर हम इसको कट भी करते हैं तो you will get like this. This is limit h tending to 0, this is minus 1 power 1 by 2, that is okay. यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर अपॉन में हाफ बच जाएगा, this is minus h की पावर 1 by 2. तो यहाँ पर जब हम h बराबर 0 पुट करेंगे, then you will get is tending to infinity, है ना, this will be tending to infinity, some undefined value, because here minus 1 की power half है, that is your iota. It will be h tending to 0, then it will be tending to towards the minus infinity, you can say minus infinity or plus infinity, it will be undefined, you can say. So this is undefined. So if it is undefined, then it means left hand derivative that not exist. अगर हमको एक ही डेरिवेटिव, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड, एक भी अगर हमको डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट उस वो डिफरेंशिएबल नहीं है. तो दिस इम्प्लाइज दिस fx which is defined like this, x minus 1 की power 1 by 2 it does not exist, it's not differentiable, it's not differentiable at x equals to. अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही से चेक करके हम सॉल्यूशन लिख देंगे. ओके, next problem number 3. They ask about the test the differentiability. Test the differentiability. Test the differentiability of the function fx at x is equals to 2. X equals to 2, where this fx is equals to this is 1 plus x when this is x is less or equal to 2, and this is minus 5 minus x when x is greater than 2. So this is function defined like this. We have to check the differentiability of the function at the point x equals to 2. Okay, so left hand derivative, this is limit h tending to 0, f of a minus h minus of fa divided by minus of h. Here a is equals to 2, so this implies f of 2 is equals to when x is less or equal to 2. तो equal to 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है 1 plus x, and that will be equal 1 plus x मतलब 1 plus 2. This will be 1 plus 2 and that will be equals to 3. तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई. तो इज द पॉइंट a equals to 2. ओके, तो आइए जरा यहाँ पर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of
a माइनस एच, a माइनस एच का मतलब हो जाएगा दिस इज योर 2 माइनस एच minus का f2 and divided by minus of h, and from here you will have limit h tending to 0 आप 2 minus h, 2 minus h का मतलब है फंक्शन इज लेस देन, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो इट विल बी योर 2 minus this is 1 plus 2 minus h and this is minus of 3 divided by minus of h, so this is cancelled. We will have this is limit h tending to 0 and this is 1 is here and this is plus of 1 because minus h remain करेगा ऊपर और नीचे भी minus h, तो ये will be plus का 1 हमारे पास बच गया। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आ रहा है, and that is equal to limit this is your h tending to 0 f of this is 2 plus h minus का f2 divided by plus का h, okay this is limit h tending to 0, this is 2 plus h, so this is this time this function will be taken because 2 plus h which is more than 2, so this is 5 minus of 2 plus h, okay, and this is minus of 3 divided by this is h. So from here you will get this is limit h tending to 0. This is your 5 minus 2 is 3 and minus h minus 3 divided by h. So you will get here this is your limit h tending to 0. 3 से 3 cancel or h cancel, so minus 1 is remaining here and it will be minus of 1. तो here जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आ रहा है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है that is equals to minus of 1. So this function is not differentiable. So this implies this since left hand derivative is not equals to right hand derivative. Okay, this implies fx is not differentiable. Fx is not differentiable at x is equals to 2 पॉइंट क्या था हमारे पास 2, ओके, तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम नंबर 3। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, है ना, इसको खुद से आप ट्राई करिए सारी प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। a function fx is defined as follows, this is fx is just equal to x when this is x is less than 1 and greater or equal to 0, and this will be 2 minus x when x is greater or equal to 1. Okay, so test same है, test the character of fx, it means वही differentiability आपको चेक करना है at x is equals to 1 as regards its differentiability. Its differentiability. Okay, so let's see कि हमारे पास क्या आएगा। तो सिंपल है, just writing left hand derivative first, so this is limit h tending to 0 और फंक्शन यहाँ पर लेस देन 1 के लिए हम 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करना है हमको, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये होगा, तो दिस इज f ऑफ 1 माइनस h माइनस का f1 डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस ऑफ h, तो दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h के लिए फंक्शन x आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस h और फंक्शन की वैल्यू एट 1 is just equal to 2 minus 1 is 1, so it will be minus of 1 divided by minus of h, so this cancel, minus cancel, so it will be 1. So left hand derivative is 1 and right hand derivative हमारे पास क्या आ जाएगा, that is equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h minus का f1 divided by minus plus of h,
ठीक. So from here we will have this limit h tending to 0, 1 plus h in the second one यहाँ पर पुट करेंगे तो this is 2 minus 1 plus h minus 1 divided by h. So from here you will get the limit h tending to 0. This is 2 minus 1 minus h minus 1 divided by h. So from here you will get the limit. This is 2 minus 2 is 0. Minus of h is cancelled, is minus of 1. So right hand derivative is minus 1, left hand derivative is 1. So since left hand derivative is not equals to right hand derivative, this implies function is not differentiable. अभी तक तो सारे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही आ रहे हैं. लेट अस सी दी फोर्थ आंसर क्या है. 3 is not differentiable at x equals to 2 and 4 is also not differentiable at x equals to 1. Okay. फिफ्थ की बात कर लेते हैं. फिफ्थ आपका जो है पूछा भी गया है आपके एग्जाम के अंदर. आपकी जो आपका जो एग्जाम होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो उसमें पूछा गया ये प्रॉब्लम. एलयू आपका 2005 में प्रॉब्लम पूछा था और 2010 में पूछा था ये प्रॉब्लम. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी. टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी test the differentiability of the function fx at x is equals to 0 for fx is equals to fx जो फंक्शन डिफाइंड है that is equals to x upon 1 plus e to power 1 by x when x is not equals to 0, or the value of 0 function is at 0 is 0. Okay, तो इसके डिफरेंशिबिलिटी को टेस्ट करना है. दिस इज फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, तो यू विल जस्ट अप्लाई द सेम प्रोसेस जो हमें करना है. दैट इज सिंपली so left hand derivative you can say LHT is just equal to, this is a limit h tending to 0 f of a minus h minus का f a divided by minus of h. Okay, so we have this is your limit h tending to 0 f of a minus h minus f a upon minus of h. So it will be, you will have this is here 0 is point here a is equals to 0. We have to check at 0 and actually so it will be f of minus of h minus of f0 divided by minus of h. So in the place of this is limit h tending to 0. So here in the place of we have this function when x is not equals to 0. So minus of h, then you will have put this is minus h upon 1 plus e to power minus 1 by h. So in the place of x you will put minus of h, and this is 0 actually, and upon में minus of h. This and this is cancelled out. You will have this limit. You have this is limit h tending to 0, and it will be your 1 upon 1 plus e to power minus 1 for h. अब थोड़ा सा ध्यान देने का है कि यहाँ पर जो है we are going to apply this limit h tending to 0 and h is यानी पॉजिटिव नंबर.
because we take here some positive which is very small, which is tending to 0. Okay, so this e to power this one, what we have, this I'm just going to this 1 upon h. When this h from the right side, it will be from the right of the 0 and tending towards 0, then 1 upon h will be tending to plus infinity. ये ध्यान देने का है. This will be plus infinity, and if you are just apply minus here, so you will get this is minus 1. So this is plus infinity. So if I'm just saying this is limit s tending to 0, okay, and it is from negative side. When I'm tending to 0 from negative side, this at 1 by h will be minus times of infinity. Okay, so here we are from the positive side actually. So if it is from positive side, the limit h tending to 0, then it is minus 1 upon h will be tending to minus infinity. Okay, so here this limit h tending to 0, this 1 upon 1 plus e power minus 1 by h is here. So it will have, this is 1 upon 1 plus e to power minus infinity. And we know that this if this limit x tending to minus infinity, then e power minus infinity minus x e power x, then e power x will be tending to 0. ठीक है, so this will be 0. E power minus infinity is 0, you can just say. So this is 1 plus 0, it means 1 upon 1. So from here you will get 1. It means जो left hand derivative है इस फंक्शन का, that is equals to 1. Okay, so ये समझ में आ रही है ना कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. This बहुत सिंपल है. This when h is tending to 0, then 1 upon h will be tending to infinity, so it will be e power minus infinity. E power minus infinity is 0, then you will get this 1 0 here, and this is 1 plus 0 is 1. So this is 1. So left hand derivative is 1. Now let us talk about right hand derivative. Right hand derivative, yeah, you can say this is RHD, right hand derivative. So this is your limit h tending to 0, and this is f of a plus h minus the f a divided by h. So from here this is limit h tending to 0. This is f of 1 plus h. Okay, so this is 1 plus h. This is your 1 plus h. मतलब हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे? We are talking about 0. 0 plus h. Okay, so minus का h 0 and divided by this is h. अब यहाँ पर ध्यान देना, this is limit h tending to 0. This will be f of h minus the 0 divided by h. अब f की वैल्यू रख देते हैं. The limit h tending to 0. This is your h upon 1 plus e to power upon h divided by h. Okay, so this cancelled, and you will get here, this is your limit h tending to 0. This is 1 upon 1 plus e to power 1. Okay, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर limit h tending to 0, and this is 1 upon h, it will be plus infinity, है ना? And plus infinity, it means this limit h tending to 0, e to power 1 upon h will be tending to plus infinity. It will be tending to infinity. So it will be 1 upon 1 plus infinity. It means that it is equals to 0. तो यहाँ पर जो right hand derivative है, that is 0, but here the left hand derivative is 1, and both are not same. So since left hand derivative is not equals to right hand derivative, this implies function, you can write like this, that given function is not differentiable at x is equals to 0. Okay, so x बराबर 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं. Okay, so we have completed 5 problems, and आपकी एक्सरसाइज में 11 प्रॉब्लम्स हैं. तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, वरना जो है लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा.
क्योंकि इट टुक टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेन द थिंग्स, है ना। तो आई होप कि आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ गए, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, और चीजों को आप अच्छे से करिए, प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि कैसे हमारे पास लिमिट्स को हम कैलकुलेट करें। बेसिकली कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, दिस इज द बेस ऑफ लिमिट, है ना। अगर लिमिट को कैलकुलेट करने हमें आता है तो हम इजीली चेक कर पाते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन का कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बाकी और सी चीजें तो लिमिटिंग वैल्यू पे निर्भर करती है उस पर्टिकुलर फार्मूले के। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द रेस्ट प्रॉब्लम्स, है ना। जो हमारी बची हुई 6 प्रॉब्लम्स और हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तो मस्ट विजिट द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।